Hello, friends. Welcome to Daily PT Pointers, in which we will discuss the important headlines of the day for September 12th. Our first topic is related to Eastern Economic Forum. ये न्यूज़ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आई थी और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलिवेंट है. सो न्यूज़ ये है कि the Union Minister of Ports, Shipping and Waterways and Ayush, Shri Sarbanand Sonewal, left for Russia to represent India at the Eastern Economic Forum, which is being held at the Russian port city of Vladivostok. The 8th Eastern Economic Forum 2023 is taking place on 10 to 13 September 2023 in Vladivostok on the Far Eastern Federal University campus. बात हम थोड़ा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में कर लेते हैं. So this forum was established by the decree of Russian President Vladimir Putin in 2015 to support the economic development of Russia's Far East and to expand international cooperation in the Asia Pacific region. पिछले कुछ सालों से रशिया ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने फार ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए. वहीं अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो चाइना इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द रीजन as it sees potential in promoting its BRI initiative, that is Belt and Road Initiative. And besides China, South Korea has also been gradually increasing its investment in this region. वहीं बात अगर हम इंडिया की करें तो in 2019 it has offered 1 billion line of credit to develop the infrastructure in the Russia's Far East region. Next topic हमारा ग्लोबल सिंपोजियम से रिलेटेड है. ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था और इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल विजिट द फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट एट द ICAR कन्वेंशन सेंटर in New Delhi. It is organized by the Secretariat of International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture of the Food and Agriculture Organization. वहीं अगर हम बात ग्लोबल सिंपोजियम की करें तो इट इज बीइंग होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल से रिलेटेड है. ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलिवेंट है. द सऊदी अरेबियाज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी co-chaired the first summit level meeting of the India Saudi Arabia Strategic Partnership Council. The India Saudi Arabia Strategic Partnership Council was set up in 2019 and it made India the fourth country with which Riyadh formed such a partnership, and the other three countries are यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना. अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के पिलर्स की बात करें तो इट हैज़ टू मेन पिलर्स. द फर्स्ट इज कमिटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन एंड द सेकंड इज कमिटी ऑन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट्स. इसके 4 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं दैट हैज बीन फॉर्म्ड अंडर ईच सब कमिटीज. हमारा नेक्स्ट टॉपिक G20 डिक्लेरेशन ऑन हेल्थ से रिलेटेड है. ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और हेल्थ एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलिवेंट है. न्यूज़ ये है कि all the 3 health priorities of India's G20 presidency found a mention in the G20 New Delhi Leaders Declaration that has been released recently. The declaration spoke of strengthening primary healthcare, health workforce and essential health services to better than pre-pandemic levels, and it has to be done ideally within the next 2 to 3 years. In addition to focusing on epidemics such as tuberculosis and AIDS, the G20 recognized the importance of research on long COVID. The declaration also stressed the importance of One Health approach where diseases in animals, plants and humans are tackled by the same mechanism with focus on tackling antimicrobial resistance. हमारा नेक्स्ट टॉपिक 2014 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड है. ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और पॉलिटी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. सो रिसेंटली a constitutional bench held that a Supreme Court judgment of 2014 which declared invalid a legal provision mandating the CBI to take prior permission before investigating corruption cases against senior government officials has a retrospective effect. Now, what is retrospective effect? When a change is implemented that affects the past in addition to the present and future, it is called a retrospective change. The Supreme Court said the provision in question, that is the Section 6A of the Delhi Special Police Establishment Act, the statute that governs the CBI, was void from the very day of its insertion on September 11, 2003. So this means that senior government officials involved in corruption cases even before the date of Supreme Court judgment invalidating the need for prior sanctions would no longer be able to avail the protection of prior approval. हमारा लास्ट टॉपिक चाइनाज इकोनॉमिक स्लोडाउन से रिलेटेड है. ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलिवेंट है. नाउ इकोनॉमिक डाटा coming out of Beijing over the past few months indicate that all is not well
with the world's second largest economy, which was expected to spring back and drive global growth after 3 years of grinding restrictions placed under President Jinping's zero COVID policy. Zero COVID policy क्या है? It aims to drive down the number of COVID cases by imposing strict lockdowns, closing borders, and imposing travel bans. And this policy is in contrast to the living with COVID-19 strategy. Figures on August 8 showed that the country suffered its biggest fall in export in more than 3 years. वहीं चाइना के एक्सपोर्ट की बात करें तो China's export declined from a record high of $340 billion in December 2021 to $284 billion in May 2023. The growth in China's GDP was fueled by investments and not the domestic consumptions. Many countries have followed an investment-driven model, but China's reliance on it was extreme. For example, investment was nearly 50% of its GDP, while household consumption in 2010 was just 34%. So friends, ये आज के हमारे important headlines of the day थे. For more updates on current affairs, you can follow us on our social media platforms. Thank you.